Kochhar, she and her husband both now have been arrested by the Central Bureau of Investigation. But what really is this case about? What are the allegations and what happens from here on? That's going to be our focus on this edition of the This Is Exclusive. Let's get kick-started with our headlines on Top of 6. Former ICICI Bank CEO Chanda Kochhar and her husband sent to CBI custody till Monday in a loan fraud case. It's a big development in the Shahi Idgah versus the Krishna Janmabhoomi case. The court now has ordered for a survey. Amidst a global alarm over COVID, India swings into action mode. RT-PCR mandatory now for international passengers. सुरक्षा नहीं, आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले है। और ये कांग्रेस ने समय समय पर दिखाया। कोविड की शुरुआत पर भी No mask, no COVID protocols. Rahul Gandhi marches on. The BJP fires a Parivar over protocol jibe. सबने सफ़र किया पर कश्मीरी पंडितों ने बहुत सफ़र किया है और हाल ही में उनकी काफ़ी हलाकतें भी हुई हैं, तो इसको बड़ा गौर से देखने की ज़रूरत है और कुछ अरसे के लिए जो उनकी डिमांड है उसको मान लेना चाहिए। Mehbooba Mufti stoking a controversy. She won't call for crackdown on terror, but now wants relocation for Kashmiri Pandits. And the wreathling ceremony for the 16 army personnel who lost their lives in an accident held earlier today in West Bengal. Let's begin this edition of the news with more details on the case about Chanda Kochhar and her husband. Now, the Central Bureau of Investigation, that is the CBI, has got a 3-day remand for the former managing director, the chief executive officer of the ICICI Bank, Chanda Kochhar, her husband Deepak Kochhar. The CBI arrested the couple on Friday late night. This was in connection with the alleged ICICI Bank Videocon money laundering case. The CBI law, in fact, in the court says that they've arrested the accused number 4 and 5 as per the FIR registered with them. So the CBI now has a 3-day remand for the former managing director. She's also the chief executive officer of the ICICI Bank, Chanda Kochhar. The charges, remember, against her, we are also flashing those details on your screens. And there has been a sense from the agency that she and her husband have been rather evasive as far as the entire investigation goes. They have been, remember, summoned for investigation a couple of times, after which the agency now decided to arrest them. They were produced in a local court. What you see on your screen, in fact, right there in the center, are images of them earlier today when they were produced in the court. And like I said, now they will be in the custody of the CBI. And this is about a 3,000 crore loan that was provided to Videocon. The case now that is being investigated by the CBI. Alisha also joining us live right now. She has more details. Alisha, first up, give us the background of the entire case. Where does the investigation stand? And what really has been the role of Chanda Kochhar and her husband Deepak Kochhar? When it talks to the role of Deepak and Chanda Kochhar, what has been mentioned by the CBI? Because there is 1,000 crore which has been making a loss because of the sanction that was given by Chanda Kochhar and Deepak Kochhar. Moreover, it was more than 1,000 crore which has actually made it a loss to the ICICI Bank. And this is what transpired during the course of investigation by Central Bureau of Investigation, after which CBI has arrested Chanda Kochhar and Deepak Kochhar, and both were present before the special CBI court in Mumbai. Now, what is also mentioned before the court when it comes to the CBI, it also they have
there are several evidence that has come across the loss that has been made to the bank and of course to the investor as well. While we know that there were several people who has come across to it, and moreover there was also defense lawyer Amit Desai who was defending in front of the court, who was appearing for Chanda Kochhar and Deepak Kochhar, who mentioned that the arrest that has been made by CBI is illegal because the case that has been registered earlier by the enforcement directorate is something that has also been given before the court, and the case in which enforcement directorate was looking into it is something a matter of question. But the arrest that has been made by CBI is something illegal. But there are several evidence that has actually transpired before the court, and the CBI has actually given those evidence while making an argument, and the CBI initially has sought for the 3 days of custody. After hearing the arguments, whether from the CBI or whether from the defense lawyer, the special CBI court has sent Chanda Kochhar and Deepak Kochhar to CBI custody for 3 days. You know, Alisha, the entire case is about the time when she was the CEO of the ICICI Bank, and there is when a loan was offered to the Videocon, group there. There are also allegations that some amount from that loan was siphoned off towards, buying a flat. So this is again a case that is murky. This is a case of alleged, overuse of Chanda Kochhar's power as she was heading then the ICICI Bank. But what have the two said so far? Because, the lawyer has been again and again saying that there has been no wrongdoing. But what the agency says and on what charges the agency now has arrested the duo is on charges of non-cooperation in the investigation. Well, it is a case that has been registered by CBI over the irregularities which has come across during the course of investigation. Not only this, but they both have also cheated is what a CBI has mentioned before the court. Moreover, they have also mentioned that there are several times when the Chanda Kochhar, while in custody, while in judicial custody, was also been questioned, but there was no cooperation that has been, provided by the Kochhars, which is why it is a need of the hour is that they have been arrested. And where the CBI has asked for the 3 days custody, and there were several of the points and the evidence that I have also mentioned earlier. While there are more than 1,000 crore which has really stated a loss to the ICICI Bank because of the involvement of Chanda Kochhar and Deepak Kochhar. We know that in 2018, whether Chanda Kochhar has already stepped down as the CEO of the ICICI Bank, but still there was an involvement, and there are also many of the people in this entire case, specifically when it comes to the irregularities which has happened by Kochhars, and CBI getting all those evidence that has transpired during the course of investigation. They have arrested Chanda Kochhar and they were brought to Mumbai. Specifically, they were produced before the special CBI court in Mumbai, and many of the points that has been put forward by the CBI when it comes to the details of the irregularities and the cheating that has been conducted by Chanda Kochhar and Deepak Kochhar in this entire fraud case, ICICI Bank and Videocon fraud case, which has been also investigated by enforcement directorate earlier back then, and they were also arrested, because we even know that ED who has already filed earlier filed the ECIR, and they have questioned for around 11 to 12 hours, and after that after a long hours when the Chanda Kochhar was arrested. But moreover, now the CBI has arrested Chanda Kochhar. They have asked for the 3 days, and the same 3 days custody has been provided, has been granted by the special CBI court. So, she's someone who actually ruled the banking industry once, and then, like they said, Alisha, greed struck. We'll track that story. The story is extremely important, and the story is also of, someone called Chanda Kochhar, who was known in the power circles, the banking circles, is very respected. But look at what's happened in the entire case. The CBI, remember, has custody now till this Monday. We'll track the story. Alisha getting us those details. Thank you. Shifting our focus now to what's been happening also in Jammu and Kashmir. Now, in an exclusive, Republic has accessed the pictures of a massive recovery that has been made earlier today in Baramulla. This is a massive crackdown on terror where the J&K cops and the army have recovered. What you see on your screens is a huge cache of arms and ammunitions. This is in the Hantlanga sector
of Uri. This is North Kashmir's Baramulla district. Zeenat is on the phone line. She has more details. Zeenat, do we have absolutely any idea about who really was behind this? Who was this recovery actually meant for? See, this kind of Dipti, as we know, that Pakistan trying to push infiltrators and the men and machinery, arms and ammunition through the line of control, despite that the ceasefire agreement is intact. This time from the Hatlunga sector of Uri in North Kashmir, which is more than 100 kilometers from the Srinagar city, the police along with the army had recovered a huge cache of arms and ammunition in this very area. In the joint operation, we are picking up that 8 AK-74U with 24 magazines and 560 rounds, 12 pistols with 24 magazines and 244 rounds, 14 grenades, 81 balloons with Pakistani flag, imprint wheat bags, synthetic gunny bags with made in Pakistan prints, 5 in number among the incriminated material that has been recovered from this area. Although the case has been registered in police station Uri in this and investigations are going on, but at the same time you see the kind of arms and ammunition that have been recovered. This is huge. This is one of the largest recovery being done by the joint forces in North Kashmir. The kind of ammunition that had been recovered in the Hatlunga sector, because this is the sector which was earlier prone to ceasefire violations, but since now the ceasefire agreement is on, we see that there is no ceasefire violation since then. But then despite all this, we are seeing that the Pakistan pushing the infiltrators and arms and ammunition. You remember in 2020, although year is coming to an end, that many operations were launched at the line of control by J&K police along with Indian Army, in which many FTs, foreign terrorists, the Pakistani terrorists, were neutralized. Their ID cards that tells you that they were the residents of Islamabad or they were from the other province of Pakistan. Their ID cards, arms and ammunition, that also includes the tagline that made in Pakistan and other places. Those were also recovered during the time of anti-terror operations along the line of control. So today it is a big success for the security forces when they have completely cracked down on the terror network in North Kashmir's Uri, where the huge cache of arms and ammunition have been recovered by the joint forces. Yes, Zeenat, for the moment, thank you so much. We'll track that story every year. I think before the snow sets in, you do see, an uptick in these activities, and our agencies, our forces there on alert. The reason why they've been able to catch this massive cache of arms and ammunition. And from that story to the other story that has been grabbing a lot of headlines. Remember, for the last few days, you're looking at the government of India in a proactive mode, trying to ensure that there is no panic when it comes to the COVID cases. But yes, we need to be vigilant. Now, initially, remember, they said that about 2% samples of travelers at the airports will be picked up for random testing. But they've revised that guideline today. In fact, they've extended it to say that RT-PCR now is going to be mandatory for travelers who are coming in, particularly from countries like China, Indonesia, Vietnam, South Korea, keeping in mind that possibly it's important that we are able to isolate the virus in time. Also, it has said in a guideline that just in case anyone is found to be symptomatic or positive, that person is going to be quarantined. Our colleagues reporting from different airports, getting you the ground situation. We are reporting from the international arrivals at the IGI Airport Terminal 3, and from today the 2% sampling of international people who've coming from abroad at international arrival will begin. Right behind me is the international arrivals from where we are reporting, and from today, as per the advisory given by the Health Department, the Health Ministry and the Civil Aviation Ministry, as you can see, there are multiple international arrivals happening over here. People from
abroad right in front of you. Many foreigners are coming in our country at the time of New Year's to celebrate Christmas and New Year's, and which is why this particular advisory has been published by the Health Ministry, where they have clearly and categorically stated that all those who are traveling from abroad and from affected area will be tested. The random sampling will be decided by the airline staff itself, following which if any of those who are found positive will be assisted as per the guidelines. Also, the positive samples will be sent for genome sequencing as well to determine the variant, if there is any difference in the variants. Also, at the same time, children below the age of 12 will not be chosen for the sampling. It will be a hassle-free procedure, and all this is being done to remain prudent, to make sure that prevention is better than cure, and if at all, if somebody is positive, they can be assisted right there and then, because the number of cases that are rising in countries like China, USA, Brazil, Japan, it has become imperative for India to straighten up its guard, and which is why in a preemptive measure the Health Ministry has issued a guideline, and we are reporting from the IGI International Arrival from where these international people coming from abroad will be coming out, and it is here where the testings will be done. The COVID RT-PCR test will be conducted as per the guidelines of the Union Health Ministry. This is Madhurima Mishra with Vijay Narudeshwar for Republic TV. चीन और जापान में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, इसके बाद भारत में भी कोरोना संक्रमण को लेकर खतरा मंडरा रहा है, और इसीलिए सरकार सजग है। हर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसको लेकर बैठक की है कि हर तरह की तैयारी की जाए। फिलहाल मैं भोपाल के जेपी अस्पताल में हूं, जहां पर आप देखिए जैसे ही ये खबर आती है कि संक्रमण अब फैल रहा है, नया वेरिएंट का खतरा है, इसके बाद जो वैक्सीनेशन के लिए जो लोग आने की संख्या है वो अचानक तेज़ी से बढ़ी है। चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे कोवैक्सीन हो, तमाम जो वैक्सीन लगवाने जो लोग आ रहे हैं, पहले 3 दिन पहले तक की अगर बात की जाए तो सरकारी रिकॉर्ड में 2 से 3 लोग ही अमूमन वैक्सीन लगवाने आ रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिन से जब से ये सरकार ने अलर्ट जारी किया है, सरकार ने कहा है कि सतर्क रहने की ज़रूरत है, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की ज़रूरत है, उसके बाद से जो लोग हैं वैक्सीन लगवाने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। बेटा, आप पहला डोज है? हाँ, ये पहला डोज है मेरा। अभी जो देख रहे हैं कि चीन जापान में तेज़ी से फैल रहा है, इसके बाद आप खुद से इनिशिएटिव लेकर आए डोज? हाँ, इसकी वजह से 14, और अभी मैं लगाने गई थी बट लगा नहीं, क्योंकि जब तक मैं 14 की नहीं हो जाऊँ, और मुझे भी डर था, इसकी वजह से मैंने लगवा ली। हाँ मैम, अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो जैसे अभी ये बच्ची आई है, इसी तरह जो हम सरकारी रिकॉर्ड देख रहे हैं, 2 से 3 दिन पहले तक 2 या 3 लोग ही कोरोना, कभी 2 ऐसे आते थे। अच्छा, और अब क्या स्थिति है? आज तो 10 से 12 लोग हो गए हैं। मतलब जैसे जैसे ये संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है या सरकार अलर्ट पे, उसके बाद लोग ज़्यादा खुद से आ रहे हैं? बहुत लोग आ रहे हैं, अपने आप से ही आ रहे हैं। सिविल सर्जन है डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव सर, उनसे हम बात करते हैं। सर, आप एक्चुअल स्थिति बताइए, 3 दिन पहले तक या 4 दिन पहले तक और अभी की स्थिति। अभी हम लोगों के पास 1-2 मरीज आते थे, 3 मरीज आते थे, उनको थोड़ा सा हम लोगों को समझाना पड़ता था, उसके बाद वो लगाते थे। और अब सरकार ने अपील करी है, और जो खतरा, संभावित खतरा देखते हुए काफ़ी लोग आ रहे हैं, पूछताछ भी बड़ी हुई है। कोविशील्ड के लिए भी जो लोग आ रहे हैं अभी हमारे पास उपलब्ध जो है, सरकार उसके हिसाब से सरकार ने भी बुलवाई है, भारत सरकार से लिए कोविशील्ड बुलवाई है, तो अभी जो उपलब्ध है वो लगा रहे हैं हम। तो उसमें बड़ा अच्छा देखने में आ रहा है कि लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। सरकार ने जो अपील करी है, बहुत अच्छी बात है कि अपने भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने जो पहल शिवराज जी ने करी थी, माननीय शिवराज जी ने, कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया है, उससे बड़ा फ़ायदा हुआ था कि अपन लोगों को ज़्यादा डरने की बात नहीं है। So that's the report that you've seen being filed from Bhopal. But what should people do? What should citizens do? Should you be concerned? Should you panic? These are questions that must be on top of your mind. Let's get in this conversation
From the All India Institute of Medical Sciences, Dr. Sanjay Rai, he remembers the part there of the Community Medicine Department, and he tells us more about what you should exactly be doing right now. Thus, we have Professor Sanjay Rai from the All India Institute of Medical Sciences. सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इस समय दोबारा से कोविड के केसेस जिस तरीके से चाइना, जापान, यूएसए में बढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली चाइना में, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी देश हैं, कितना वरी होने का सिचुएशन है हमारे लिए, है भी कि नहीं? जो हमारे यहाँ कंट्रोल है उसका मेन रीज़न जो है नेचुरल इन्फेक्शन है। ये हाईली वैक्सीनेटेड कंट्रीज हैं, चाहे आप साउथ कोरिया की बात कर लें, जापान इवन 4 डोज तक दिया जा चुका है। सो चाइना 346 करोड़ से ज़्यादा डोजेज दिए जा चुके हैं। बट वैक्सीन से इसलिए शायद डेथ कम हो रही है, जितनी होनी नहीं, अगर वैक्सीन दी गई होती तो डेथ और ज़्यादा होती वहाँ पे। लेकिन फिर भी उसको रोक पाना असंभव सा होता है। हाँ, आरएनए वायरस होने के कारण यहाँ पे भी हो सकता है, केसेस हो सकते हैं कहीं भी, क्योंकि री इन्फेक्शन भी हो सकता है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी हो सकता है, बट उससे सीवियरिटी बढ़ेगी और डेथ बढ़ेगा, बहुत ही अनलाइकली है। तो हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसको मॉनिटर करते रहने की ज़रूरत है। सरकार अपने आप कर रही है। सरकार ने प्रोएक्टिव रोल लिया है, उसने सारे एडवाइजरी जारी कर दिए, सारे स्टेट को भेज दिया एडवाइजरी। मॉनिटर करना ज़्यादा ज़रूरी है इस वायरस के कैरेक्टरिस्टिक को, कि क्या कोई बिहेवियर चेंज तो नहीं हो गया, क्या नेचुरल इन्फेक्शन जिनको हो गया था उनको बाईपास करके, इम्यूनिटी को बाईपास करके वहाँ सीवियरिटी तो नहीं कर रहा है। तो वह मॉनिटर करते रहना चाहिए, लेकिन डरने की अभी ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं लगता कि नियर भविष्य में कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। हाँ, हो सकता है कि अगर कंप्लीटली वायरस चेंज हो जाए, बिल्कुल ही न्यू वायरस आ जाए, तब प्रॉब्लम हो सकती है। 100% गारंटी नहीं दी सकती, लेकिन जिस तरीके का एविडेंस हमने जनरेट किया है पिछले 3 साल में, अगर मैं उसको यूज़ करूं तो यह जो है कहा जा सकता है कि अभी इतनी बड़ी समस्या अपनी कंट्री के लिए नहीं आने वाली है। तो सर, मेरा आखिरी सवाल कि जिस तरीके से हमने पहले 3 वेव्स में कॉम्बैट किया इस चीज़ को, कितने रेडी हैं हम? क्योंकि मिनिस्ट्री भी काफ़ी एडवाइजरीज निकाल रही है, कह रही है ऑक्सीजन चेक करिए, अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करिए, मॉक ड्रिल की बात हो रही है। तो कितने रेडी हैं हम अगर एक दूसरी वेव आती है? देखिए, हमेशा हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। किसी भी सार्स कोरोना वायरस तो नहीं, कल हो सकता है कोई दूसरा भी वेरिएंट आ जाए, कोई दूसरा वायरस आ जाए, अदर देन कोरोना वायरस कोई दूसरा वायरस आ जाए। हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए, इवन प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे तैयार रहना चाहिए। वह एक अच्छी बात है। लेकिन इस सार्स कोरोना वायरस 2 को लेके कोई प्रॉब्लम होने वाली, जैसा मैंने कहा, अनलाइकली है। बट बहुत ही अंतर है, सेकेंड वेव और इस समय में बहुत ही अंतर है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है सरकार की तैयारी है, ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। जिस तरीके से तैयारी है, ऐसी तैयारी पहले कभी नहीं थी। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो हम बेटर इक्विप्ड हैं। Thank you. So this was Dr. Professor Sanjay Rai, and he says that it's highly unlikely that India would be affected the way China is being affected by this new variant. This is Madhurima Mishra with Vijay Narudeshwar for Republic TV. So those, ladies and gentlemen, are some reassuring words there coming in from the AIIMS doctor. But what should our netas be doing? The Union Health Minister, remember, has said, please follow the COVID protocols. When we come back, we will take that story ahead and we'll actually see what happened in the Bharat Jodo Yatra. No mask, no COVID protocols. Rahul Gandhi now has entered the national capital and he continues to insist that there is absolutely no need to even follow the COVID protocols. The BJP hitting right back. Also, Mehbooba Mufti has stoked another controversy. She will not call for a crackdown on terror, but now she wants relocation for the Kashmiri Pandits. Tonight, a murder will be committed. If anyone can name the killer, that person wins our game. This is truly delightful. Holy There has been a murder. For one person, this is not a game. The killer wouldn't hesitate to kill again. You must be really great at clues. I'm very bad at dumb things. Glass Onion, a Knives Out mystery.
India welcomes those who further India's pride across the globe. Indian diaspora, partners of New India's growth journey in Amritkal. Come and be a part of the 17th Pravasi Bharati Divas from 8th to 10th January 2023 at Indore, Madhya Pradesh, India. For registration, log on to pbdindia.gov.in. Guys, just 1 second. Choosing a car for my mom. What? Online car shopping? Wow, that's so cool, yeah. Shahrukh ने बताया. Wait up. Booking a car service. From here. क्यों? तुझे शाहरुख ने नहीं बताया? इसने पूछा ही नहीं. There's so much more जो शाहरुख ने नहीं बताया. It's all on the industry first My Hyundai app. Open a world of possibility with My Hyundai app. One app, many worlds. आपकी किचन और बाथरूम्स को चाहिए MY के लेटिक्रीट SP100 टाइल जॉइंट का ऑलराउंडर. MY के लेटिक्रीट SP100 जोड़ हो तो ऐसा. With China easing restrictions, a COVID emergency situation has now risen in the country. Reports suggest nearly 37 million people have been affected with COVID-19. More than half of the population has been affected in the capital city of Beijing. Watch how streets of Beijing have been completely deserted. Courier goods have piled up and no delivery boys are reporting to duty. Streets, subways, airport and shopping malls all have been deserted in China. Beijing's swift dismantling of COVID restrictions has fallen flat and the world is now sounding an alarm over the surge. Bureau Report for Republic TV. It's time for us to head into a break. When we come back, it's a big development in the Shahi Idgah versus the Krishna Janmabhoomi case. The court now has ordered a survey. Reactions when we come back. Also, Mehbooba Mufti has stoked another controversy. She will not call for crackdown on terror, but wanting the relocation for Kashmiri Pandits. $11,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. क्या हुआ रोहन? क्या सोच रहा है? रिया पहली सैलरी मिली है. तुम भी कुछ आइडिया दो. एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए? रोहन, एक्सपेंसेस के साथ-साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है. देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना. लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में. एनपीएस में? रिया अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है. इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है. वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं. बात में तो दम है. एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है. अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ. जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा-थोड़ा जोड़ते हैं. पेंशन है तो टेंशन नहीं. एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. What's with all these attacks happening in Pakistan every single day, multiple attacks? What's happening in China? China is getting a hammering and a battering of a lifetime. What did China do wrong? After all, so many Indians were saying that, China is such a perfect society. They're vaccinating 14 million people in a day. Let that sink in. But I think India did a far, far better job. We suffered. Of course, many Indians died. But today, India is a stronger nation in terms of immunity. In the battle between content and landing,
nation decides. Republic is the winner. Slice and dice, landing channels run for cover. Content wins, landing loses. Republic, the All India #1. Very good evening, friends. This is 6:30 p.m. Saturday, live and breaking. Stories coming in from Kashmir, down south. Mehbooba Mufti, Rahul Gandhi, and a Mathura court, among others, making news. But first up, let's begin with the headlines. Former ICICI Bank CEO Chanda Kochhar and husband sent to CBI custody till Monday in loan fraud case. Big development in Shahi Eidgah versus Krishna Janmabhoomi case. Court orders survey. Amid global alarm over COVID, India swings into action mode. RT-PCR mandatory for international passengers, some of them. देश की सुरक्षा नहीं, आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले है। और ये कांग्रेस ने समय समय पर दिखाया। कोविड की शुरुआत पर भी No masks, no COVID protocols. Rahul Gandhi marches on. BJP fires Parivar over protocol. Jai. सबने सफ़र किया, पर कश्मीरी पंडितों ने बहुत सफ़र किया है और हाल ही में उनकी काफ़ी हलाकतें भी हुई हैं, तो इसको बड़ा गौर से देखने की ज़रूरत है और कुछ अरसे के लिए जो उनकी डिमांड है उसको मान लेना चाहिए। Mehbooba Mufti stokes controversy again. She won't call for crackdown on terror, but now wants relocation for pundits. Wreath-laying ceremony of 16 army personnel who lost their lives in an accident held today in West Bengal. For days, Republic has been showing you the total COVID chaos that China is witnessing, and we have been questioning as to what is China really hiding. Now, a leaked Chinese government document has surfaced, according to which almost 250 million people in the country may have been affected by COVID-19 in just last 20 days, after the zero COVID policy was diluted in the first week of the month. According to Radio Free Asia, RFA, citing leaked government documents circulating on social media, in the 20-minute meeting of China's National Health Commission, as per the leaked document, 248 million people were infected with COVID-19 from December 1 to 20. That's something that was discussed in the meeting, perhaps, or 17.65% of China's population. As per Radio Free Asia, the data on COVID cases released by the government officials on December 20 is different from the reality, as nearly 37 million were estimated. Insofar as the government is concerned, a senior Chinese journalist told Radio Free Asia on Thursday that the document was genuine and had been leaked by someone who attended the meeting, who was acting deliberately in public interest. Not often things like these happen in China. Remember, it's a dictatorial communist state, and people fear for their lives if they have to get some information out. Yet somebody had the courage really to do that. Look at the pictures, and we have these videos coming out of China, and you can see the condition that is there out on the streets. People struggling to find beds. These are open-air wards, effectively, to treat people on the go outside, because there are no enough beds available in the hospitals. The hospital infrastructure is simply not there. And moving on to another picture, and this is of inside. It seems coffins stacked one above the other. That's a real tragedy panning out in China. If these pictures are true, they are funeral homes, and some reports suggested that even top echelons of the Communist Party leadership have not been unaffected, and many of them are suffering from COVID, and possibly some of them have died. Moving on, next one, and this video is of people suffering with some severe symptoms. मैं वो
All right, those pictures really telling us a story of how the Chinese Communist state has inflicted this misery on its own citizens. Moving on to the story on its impact of Chinese COVID impact on India. In fact, in India, the government is stepping up the preparations to fight against any surge. In the fresh guidelines, Union Health Ministry has made RT-PCR test mandatory for international arrivals from China, Japan, South Korea, Hong Kong and Thailand. On arrival, if any passenger from these countries is found symptomatic or test positive for COVID-19, then he or she will be put under quarantine. In fact, Health Minister Mansukh Mandavia said earlier in the day that the centre is on alert mode and has increased surveillance. Let's listen into what the Health Minister said, and then we will have some ground reports, including a live from Chennai. में आज कोविड का केस बढ़ा है और देश में कोविड महामारी न फैले, उसके लिए हम अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं। हमने एयर सर्वेलेंस भी चालू किया है, सुएज सर्वेलेंस भी चालू किया है और ह्यूमन सर्वेलेंस तो हो ही रहा है। ये तीनों सर्वेलेंस से पता चल रहा है कि अभी दिल्ली और मुंबई में सुएज और एयर सर्वेलेंस में आरएनए मिला है। उसको देखते हुए आने वाले दिनों में क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, उस लिए हम सभी राज्यों को अलर्ट दे रहे हैं, राज्यों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। हम देश के सभी नागरिक को भी अलर्ट करना चाहते हैं कि आप मास्क का उपयोग करें, आप जरूरत बिना कारण से तो अपनी कुछ बातें कह दूं, फिर आपसे चर्चा करेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। इस यात्रा में उन्होंने कितना भारत को समझा और कितना अपनी पार्टी को जोड़ा, इस पर चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मोहब्बत का पैगाम लेकर के आया हूं। तो चले हैं मोहब्बत का पैगाम लेकर, और साथ में वो चल रहे हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। ये सच्चाई है कि नहीं? टुकड़े टुकड़े गैंग के सक्रिय सदस्य उनकी यात्रा में विभिन्न जगह चले हैं या नहीं चले हैं, ये भाजपा जानना चाहती है। इन लोगों ने जेएनयू में क्या क्या नारा लगाया था, ये हम सभी जानते हैं। तो देश से नफरत करने वाले लोगों के साथ चलकर आप मोहब्बत का कौन सा पैगाम दे रहे हैं राहुल गांधी, ये हम जानना चाहते हैं। और ये बहुत गंभीर सवाल हम आपके साथ उठाना चाहते हैं। आज आपने फिर सेना पर सवाल कर दिए। राहुल गांधी जी, कुछ आप भारत को समझते हैं? भाजपा की ओर से हम बहुत गंभीरता से सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, आप भारत की सामरिक सुरक्षा को कुछ समझते हैं? अगर आप चल के आए हैं कन्याकुमारी से, तो हिंदुस्तान कभी सेना के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करता कि सेना की पिटाई हुई है। क्या 1962 आप भूल गए? पूछ रहे हैं हमसे कि ये जमीन कब वापस आएगी। हम आपसे पूछेंगे, ये जमीन गई कब थी? जब नेहरू जी थे भारत के प्रधानमंत्री ना, उस समय गई थी ना।
और आपकी सरकार में सेना के तमाम अस्त्र शस्त्र को खरीदने में कमीशन चलता था कि नहीं चलता था, याद है ना? और याद है कि नहीं कि बहुत से जो मिडिलमैन पकड़ाए हैं उनके कांग्रेस के बड़े बड़े तत्वों से संबंध भी उजागर हुए हैं। राहुल गांधी, आप भूल गए कि नरेंद्र मोदी के आने के पहले भारत की सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे, और आज जिस तरह से भारत की सेना के लिए साजो सामान बाहर से भी आए हैं और मेड इन इंडिया भी बने हैं, उसी का परिणाम है कि भारत की सेना बुलंदी से जवाब दे रही है, चाहे वो गलवान हो या तवांग हो। वो सब वीडियो पर आया है और आप बोलते हैं कि भारत की सेना पिटती है। ये कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो सेना के प्रति नफरत और सैन्य अस्त्रों को लेकर तिजारत, ये आपकी पार्टी की राजनीति रही है राहुल गांधी। और आपने याद करिए, आपने राफेल जब खरीदा गया तब भी सवाल किया था, आपने उरी पर भी सवाल किया था, और आपने बालाकोट का भी प्रमाण मांगा था। हमेशा भारत की सेना के शौर्य को कमजोर करने में आपको अंदर से अच्छा लगता है। राहुल गांधी ठीक है क्या? आज उन्हें एक चीज सुनकर बड़ी हंसी आ गई कि हम चाहते हैं मेड इन इंडिया सामान जाए चीन के खिलाफ कार्रवाई में। राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी ने देश में मेड इन इंडिया का जो आह्वान किया, तो एक बार आपको देखना चाहिए था कि आज चीनी खिलौने भारत में बहुत कम हो गए। आज मेड इन इंडिया खिलौने देश में कितने लोकप्रिय हैं। आज चीन में दिवाली, चीन की बनी हुई दिवाली की बल्बों की लरी अब अतीत की बात हो गई। ये आप देखते हैं ना। और राहुल गांधी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपने मेड इन इंडिया की बात कही, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत और चीन के बाद दुनिया का सबसे टॉप मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। और राहुल गांधी, मैं आपको बता दूं कि एप्पल के फोन भी भारत में बनते हैं, लिखा होता है मेड इन इंडिया, जो इंडिया में भी बिकते हैं और बाहर भी जाते हैं। सैमसंग के भी फोन भारत में बन रहे हैं और लिखा होता है मेड इन इंडिया, और भारत में भी बनते हैं और बाहर भी जाते हैं। और राहुल गांधी जी, मैं आपको बता दूं कि मोदी जी के निर्देश में मुझे इस देश के आईटी इलेक्ट्रॉनिक मंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। कोरोना काल में हम लोग चीन से एप्पल की 14 फैक्ट्री लाइन उठाकर हिंदुस्तान ले आए थे। ये हम कर रहे हैं मेड इन इंडिया के लिए, और आप हम पर सवाल कर रहे हैं। अरे कभी अपने तो आईने में उठ झांक कर देखते। ये गरीबों का मजाक बनाना आपकी आदत बन गई है क्या? किसने कहा है कि हिंदू धर्म में गरीबों के मारने की बात की गई है? किसी ने तो नहीं कहा है। हाँ, आज हिंदू धर्म की सनातन चेतना को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं? राहुल गांधी, कभी आप विश्वनाथ मंदिर गए हैं काशी में? कितना सुंदर बना है। कभी आप केदारनाथ का दर्शन करने का आपको मन बना है क्या? कभी आप बद्रीनाथ गए हैं क्या? अभी जो उज्जैन में महाकाल का इतना बड़ा पुनरुद्धार सौंदर्य बना है, कभी देखने की कोशिश की है? राहुल गांधी जी, आप सोमनाथ मंदिर पिछली बार कब गए थे? आज आपको याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि आपने हिंदू धर्म पर अपनी समझदारी बताया है। तो राहुल गांधी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोमनाथ मंदिर जो तोड़ा गया था मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा, वो जब बना सरदार पटेल राजेंद्र बाबू के प्रयास से, तो भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जब गए थे उसका उद्घाटन करने, तो आपके नानाजी नेहरू जी ने उनको मना किया था, फिर भी वो गए थे। आज आपको बताना जरूरी है, ये समझाना जरूरी है। इसीलिए आज की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की सरकार है ना। और राहुल गांधी जी, आप बार बार जो धार्मिक विद्वेष की बात करते हैं, तो आज मुझे आपको कुछ बताना है।
एक महान नेता सरदार पटेल, जिसने प्रामाणिकता से आजादी के बाद देश को जोड़ा था। 550 से अधिक रियासतों को भारत ने मिलाया था। आपने सरदार पटेल का कभी नाम लिया क्या अपनी यात्रा में? आज उनका ऐतिहासिक दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनी है, कभी वहां जाने की भी आपको सुध मिली कि वहां जाके प्रणाम करना चाहिए? कभी नहीं। और आज आप कह रहे हैं कि हम जाएंगे कश्मीर में तिरंगा लहराएंगे। तो राहुल गांधी जी, कश्मीर में तिरंगा लहराने का सौभाग्य कैसे मिल रहा है? 370 हटने के कारण आप वहां जा रहे हैं। वहां शांति है, वहां सद्भाव है, वहां भारत माता की जय लगती है और तिरंगा लहरता है। ये काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, क्योंकि बंटवारा भी कांग्रेस पार्टी की नीति, धारा 370 भी कांग्रेस पार्टी का कुचक्र, और इसको तोड़ने में, समाप्त करने का साहस हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साहसी गृह मंत्री अमित शाह के प्रयास और संसद के द्वारा हुआ है। राहुल गांधी जी, मुझे आपको एक और बात कहनी है। कृपया करके भारत में धार्मिक आधार पर विद्वेष की कहानी बंद करिए। आज मैं विनम्रता से आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की एक बहादुर लड़की सानिया मिर्जा आज एयरफोर्स में पायलट बनने जा रही है। आपको पता है, आज भारत की हॉकी टीम, भारत की क्रिकेट टीम, भारत की एथलेटिक टीम में इस देश की बहादुर बेटियां जो अल्पसंख्यक समाज से आती हैं, वो बड़ा नाम कर रही हैं। कभी जानने की कोशिश करते हैं आप? और आपको बताऊं, 3 तलाक लाए थे हम देश की मुस्लिम बेटियों को उत्थान करने के लिए। आपकी पार्टी ने विरोध किया, याद है आपको कुछ? तो आज अब देश को जोड़ने की बात करते हैं तो आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी की विचारधारा ने और आपकी पार्टी की राजनीति ने जो नफरत फैलाने का काम किया आजादी के बाद, ये आपको बताना जरूरी था। शाहबानों से लेकर सायराबानों तक कांग्रेस पार्टी का इतिहास तोड़ने का रहा है और अल्पसंख्यक समाज को रूढ़िवादिता में घेरने का रहा है। एक मुझे और बात कहनी है कि ये बार बार कुछ व्यावसायिक घरानों को लेकर अपनी राजनीति चमकाना, तो हम उनका नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन राहुल गांधी आपसे एक सवाल जरूर करेंगे। आपकी पार्टी की जो सरकार है, वहां पर उनके द्वारा काम हो रहा है कि नहीं? ईमानदारी से बता दीजिए आप हमें। और अगर काम हो रहा है तो आपने उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है क्या? क्या मतलब है? ये झूठे आधार पर देश में क्या बयानबाजी करते हैं। हाँ, हमें याद है कि आपकी सरकार में कैसे क्रोनी कैपिटलिज्म हुआ था, फोन बैंकिंग हुई थी, इसको लोन दो, इसका लोन काटो, याद है ना? ये सब समाप्त हो गया राहुल गांधी ना। तो आपके दोस्तों की अब तिजारत चलती नहीं, तो आपको नफरत का पैगाम फैलाने का अवसर मिला है। कृपया करके ये सब बंद करिए राहुल गांधी। अपनी राजनीति के लिए आप चलिए, वो तो आपका अधिकार है, लेकिन आप अपनी पार्टी को तो जोड़ नहीं पाए, देश जोड़ने चले। इसलिए आज हमें जवाब देना जरूरी है कि राहुल गांधी मोहब्बत की बात करते हैं, दिल में एक तलखी है, और तलखी ये है कि जनता उनको वोट नहीं देती। तो मीडिया की भी आलोचना कर रहे हैं, आज तो उन्होंने आप लोग को भी बहुत सुनाया है। तो राहुल गांधी जी, अगर देश की जनता आपको वोट नहीं देती तो हम क्या करें? ये बात हम देश के सामने उठाना चाहते हैं। अभी ना चुनाव हुआ गुजरात में, 27 साल के बाद ऐसी निर्णायक जीत हुई कि कांग्रेस पार्टी औसत 50,000 वोट से आ रही है। आप जीते हिमाचल में, हिलते डुलते जीते आप, वो वहां 85 से वही परंपरा है। आगे 24 में भी हारेंगे बुरी तरह से, क्योंकि राहुल गांधी आप एक बात नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी पूरी सोच
खुद नफरत के आधार पर है, जिस नफरत की बुनियाद में है नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत। और देश की जनता नरेंद्र मोदी को प्यार करती है और सम्मान करती है। ये है आपके दिल की तलखी। तो राहुल जी, मैं आज आपको एक ही बात कहूंगा बहुत विनम्रता से, आप सिर्फ बोलिए ही नहीं प्यार की बात, कुछ अपने दिल में भी प्यार पन पाइए। राजनीति में आलोचना होती है, तलखी का स्थान नहीं होता है। धन्यवाद। राहुल गांधी ने जो सवाल खड़ा किया कि आप लोग हिंदू मुस्लिम से कब निकलेंगे, भेदभाव की भावना से कब निकलेंगे, जो विचार आप लोगों ने अगर आपने मेरी बात सुनी होगी तो क्या 3 तलाक की भाषा हिंदू मुस्लिम की थी? वो महिलाओं के कल्याण की थी। सानिया मिर्जापुर की अगर आज एयरफोर्स की पायलट बन रही है तो हिंदू मुस्लिम की बात, हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, ये आप समझने की बात करिए। और ये हम हमेशा करेंगे। आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में लाखों करोड़ रुपए गए हैं कि नहीं अकाउंट में? हिंदू में भी गए हैं, मुसलमानों में भी गए हैं। अगर आज 80 करोड़ गरीबों को खाना मिल रहा है तो सबको मिल रहा है। हम ऐसे काम करते हैं। बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर जाते हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ऐसा है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, कहीं भी जाए क्या फर्क पड़ता है। तिरंगा झंडा फहराने का क्या आपको लग रहा है, ऐसा क्या इम्पैक्ट दिखेगा? ऐसा है, सवाल तिरंगा तो सबका है, राहुल गांधी का भी है, रविशंकर का भी है, यहाँ बैठे सबों का, आपका भी है। तिरंगा पर क्या आपत्ति है? लेकिन जहां तिरंगा फहराने जा रहे हैं उस लाल चौक पर तिरंगा फहराने भाजपा के लोग ही गए थे, याद है आपको? और सेना को हम काफी सुरक्षा देना पड़ा था, हम लोग भी गए थे, युवा मोर्चा में काम करते। और आज सब लोग जाते हैं, तो ये भारत कश्मीर का माहौल बदला है। उनके लिए नहीं, ये नया इसलिए नहीं, उनको ये अवसर इसलिए मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर से खौफ का माहौल खत्म किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कभी शादी विवाह में जाते हैं तो मास्क नहीं पहनते हैं, लेकिन वही पार्लियामेंट में आते हैं तो मास्क पहन के आते हैं, ये दोहरी राजनीति क्यों? अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी हल्की बात करेंगे? अभी यहाँ आने के पहले मैं टीवी देख करके आया तो एक शहर में रोज 5 लाख लोग मर रहे हैं चाइना में।